Congress MLA Kunwar Pranav Singh from Uttarakhand, who is brazenly not just flaunting his gun but also justifying firing guns, which he says is a part of his custom and runs in his blood. Well, let's remind you that this is the same leader who was seen brandishing his gun at an event just last month. Let's get you what he said. भाई गोलियां चलाने की जो बात सुन लो, राज परिवार से हूं और कस्टम्स और अब लॉज रिवाज कानून से ऊपर होता है। गोली चलाते थे, चला रहे हैं और चलाएंगे, रुकेगी नहीं। जिस परिवार से हैं उसका शौक रहा है, उसका रिवाज रहा है, खून में है हमारे। Pranshu's on the phone line with us. Pranshu, what kind of a behavior really is this coming forward from the Congress MLA? On the one hand, it's not the first time, that we've heard a comment like this coming forward from him, coming out and saying that we've got our guns and we will continue to fire them. Nothing justifies a statement like this. Yes, that's right. In fact, this sort of a statement by an elected representative cannot be justified. And what's more shocking is that despite this concerned MLA from Kanpur constituency in Haridwar, despite he making this sort of an absurd, bizarre remarks in a public function at a particular university in Haridwar, despite that fact and keeping in mind his past record, because remember, this is not the first time this MLA has acted in this boastful manner. Remember, he is the same person who has opened fire after in a drunken state at a senior Congress's leader's residence. A couple of months back, and he has injured a couple of people. Also in the past, he has been accused of firing at one person. He has already the cases pending under section 307. He has been accused of assaulting a driver in a case of a road rage in Haridwar. So clearly, there are several cases against him. But the fact remains that the concerned Congress party and the state government has not taken cognizance of these acts of his, and he still enjoys patronage from the concerned police authorities and from the state government. So that particular patronage coming in from the local police there and from the state government, that makes things really more bad. And the very fact is that he has not been arrested or questioned. On that point, I'm going to come back to you, Pranshu. Let's just listen in to what the Congress MLA Kunwar Pranav Singh from Uttarakhand has actually said on this issue. भाई गोलियां चलाने की जो बात सुन लो, राज परिवार से हूं और कस्टम्स और अब लॉज रिवाज कानून से ऊपर होता है। गोली चलाते थे, चला रहे हैं और चलाएंगे, रुकेगी नहीं। जिस परिवार से हैं उसका शौक रहा है, उसका रिवाज रहा है, खून में है हमारे। Well, we are getting in reactions coming in from Union Minister Harish Rawat, who so far at least refused to comment on the brazen Congress MLA. जब उन्होंने कह ही दिया तो मैं उस पर क्या टिप्पणी कर सकता हूं। और सबसे बड़ी बात यह है कि हम जो भारत है वो संविधान और कानून का देश है, उससे चलता है। वो कई बार इस तरह की हरकतें कर चुके हैं, विवादों में रहते हैं, बार बार विधायक है, संवैधानिक रूप से चुने हुए एक संवैधानिक संस्था के हिस्सा है। आप हरिद्वार से हैं तो हमारे विधायक कम से कम चर्चा में तो है। नहीं, क्या उनको ऐसा कहना चाहिए संविधान का, ये तो एक तरह से क्या राजे रजवाड़े संविधान और कानून से ऊपर है? नहीं, हम देश में कानून का ही राज है और संविधान ही सर्वोच्च है। हम सब उसके पालन करता लोग हैं, हम उसी से अधिकार लेते हैं, उसी से शक्ति लेते हैं। अगर विधायक एक ऐसा कहता है, क्या उनके खिलाफ कोई कार्रवाई होनी चाहिए इस पर? मैं इस पर कोई टिप्पणी नहीं करना।